I'm too old actually for this, but you're trying to keep me. You're trying to keep me. So mega vault source of the energy. I have been. I visited you once. I hope you remember me. Yes, ma'am. Of course. Everything Yeah. floats around you when you are around. That much I can tell you. That was my one-time experience with you. We are very happy and privileged to have you here. ये मेरा दोस्त समीर आ गया कि नहीं आया उसको बुलाना पड़ेगा. Yes, Samir. He said he will. I mean, he wanted to be the second speaker. So maybe I'll just call him and make sure. Then no problem. Maybe second speaker, then no problem. Yeah, you can go in any order, Ashish. That's not a problem. Yeah. No, he wanted to be second speaker, so I said that's fine. So I think we'll start in 2 minutes. I think 2 minutes time. Ashish, I don't have the CV of Dr. Sonali is there. There's a slide for that because Samir I know, but I wouldn't be able to introduce her unless the slide is there. So actually, my CV, like a slide thing, I have not. Yes, slide. Okay, then tell me because I'm sorry. It's not your. The problem is me. I'm out of things. I'm very ill informed. So I'm sure you guys are. I'm actually, Jaisal ma'am knows, I'm just like the beginner, like just popping out of the seed right now. My only major thing which I have been proud of so far has been that I'm very interested in academics. So for the last 5 to 6 years, I have been like humbly have been having a small channel named Neonato Hub. So that started as a hobby, but then luckily it picked up so much that we started discussing. Initially used to be just discussions on neonatal topics. Then it started coming on the live sessions. We had a lot of support and enthusiasm from many of the postgraduate students joining in. Like we started just basics of what do you mean by prematurity, and right now we have been having a very strong, good family coming from national and international students. So where are you working, Dr. Sonali? Sir, I'm right now based at Nasik. I just moved to Nasik from Mumbai. I had been Preeta ma'am's student at KDH. So for the past, I think 4 to 5 years, I have been at KDH. And just 5-6 months back, I have started into the consulting field and just like entering out practically on my own. Like the umbrella is just out. So you have your own NICU or you are working in somewhere? No, sir. Right now, I have joined as a full-time consultant in one of the private setups. So we have a 25-bedded NICU right now. Just like going by whatever is coming off now. So luckily able to make some small difference in the last few months. But my major yes, sir. All of have been there, seen there. So we are all nostalgic. Everybody has to go through that. I mean, there's nobody. I started with a 1-bedded NICU. Okay, and now I run a 52-bed NICU. So if I can do that, anybody can do that. It's a 1-bedded NICU in a pantry of a small nursing home and now my NICU is 120 nurses. And the best part is I'm out of it. So you guys are much better than what we are. So you can hope for the skies. So don't let that be. What you're doing is great work. I mean, at your stage, I knew nothing of neonatology. I mean, I wouldn't have the guts to come on a forum and be speaking. That's nice. I have been fortunate to find neonatology. Very frankly, I wasn't so inclined towards pediatrics to begin with. But I tried for psychiatry for 2 consecutive years, didn't get in, and then finally landed up with a DCH seat. So for me to find something in pediatrics, which I love, was like great. And then the hang went on and on. So it's good. The thing is that the passion is there and you will do it. Ashish, shall we start? Because yes. We can start. So keep on the good work, Dr. Sonali. Yeah. So I'll start today's continuing nursing education session. So we are having this every fortnight, so every alternate fortnight. So
this week we again have planned for one of the basic topics, but very popular, and I think every nurse in the NICU has to understand IV fluids, and also understand what are the complications of IV fluids and how to administer them. And the second topic, which Dr. Samir Sheikh will be presenting, he's also going to talk about how to handle a baby who is like just admitted to the NICU and who is kind of critically sick. So with this introduction, so I'll just like to have some basic rules for the webinar. So kindly everyone, please keep their mics on mute. And if you have any questions, please put them into the chat box and our experts will be happy to answer them. So with this, I welcome Dr. Jaisal Seth, ma'am, and ask her to welcome our experts and two speakers. Thank you, Dr. Ashish. Actually, it's always interesting to be on this platform. The topics are very, very interesting, and the expert and the speakers are, very, very dynamic. So not only that we are going to hear the theory part, we are going to hear a lot of practical part of it. And then Dr. Rajan Joshi sir is there. Sir, Dr. Rajan Joshi is a very, very renowned mentor of the mentors, a senior pediatric consultant, neonatologist and pediatrician practicing at Dinanath Mangeshkar Hospital, Pune. I think sir only can many students have been, passed under his guidance. So it's actually an extreme privilege to welcome you here, sir. Sir, would you like to introduce the speakers, or do you want me to go on? I think you can go on. Okay, so the first speaker is Dr. Sonali Paradhi. She is, we were just discussing, she's one of the dynamic upcoming star neonatology educator, a very proud student of Dr. Prita Joshi, and a practicing neonatologist in Nasik. She is working in the 25-bed ICU. And the Samir Sheikh, Dr. Samir Sheikh is a very dear friend, practicing DM pediatric neonatologist in now one of his private setup. He had been earlier attached with the Wockhardt Hospital. Hearing out Dr. Samir Sheikh with his sense of humor is always a kind of, a joy, as well as extremely good learning opportunity. I wouldn't take much time. I just want to say, even if today we see only 17 delegates online, but eventually on YouTube, we have a very good viewership. So with that, I actually hand over Dr. Sonali to start the talk. Sure. Thank you so much for the kind introduction, ma'am. There's just one request to all the delegates. So our first 4-5 slides, maybe, I would like you to, at least in the chat box, give your answers as yes or no. Okay, because we are starting off by a few questions saying whether or not you want to start fluids in the first place. Now, this, as I know, everyone from the nursing side have been practicing. So anything, right or wrong, doesn't matter, but your responses would be welcome. Should I? Yeah. Is my screen visible? Yes, Sonali. Yes, it's visible. Okay. So without any further delay, let us start with the topic. So the topic that we are discussing today is about fluid management. I'll give an overview about what exactly do we expect to learn today. So it's more or less a revision of what is being done every day in every NICU till the corner of the country. So our topics of discussion are going to be the first and foremost, should we start fluids or not start fluids? So let us get that clear in the first go. The second thing will be that everyone knows that the fluids in NICU calculation is a very dynamic process because we are dealing with small babies. So baby to baby, we know that the calculations differ. So let us see how. A very, very important, in fact, I would say one of the crux of nursing in NICU is how you will be handling our peripheral and central cannulas. So the care that has to be taken. We'll be looking in short about the IV fluids, the medication preparations, and what is expected to be known from every nurse who has been catering to our little angels in NICU.
and certain special case scenarios. So we'll start with the cases here. So I just want everyone to give their yes or no answers. Okay. Now we have our first case where we have our baby who has been delivered by a spontaneous full-term vaginal delivery. Birth weight was 3.1 kg. Antenatal screening, everything was normal. There was a little difficult delivery, forceps delivery was needed. The baby cried immediately at birth, but had a secondary apnea. Now, this is a very common scenario actually, and required at least 2 to 3 puffs of bag and mask ventilation. Now, as we know that once our bag and mask ventilation, once we give PPV to our kids, we prefer to keep the child for observation. So now if I have shifted this baby for observation, clinically you're seeing that the baby is hemodynamically stable. There's no significant tachypnea which we are seeing in this child. Will you or will you not want to start IV fluids for this baby? What would be your strategy? There are some 3-4 case scenarios, just 3-4 short case scenarios. So yes or no would be welcome this thing. I can see Jaisal ma'am's answer. So I think anyone from the nursing side, whoever wants to answer, there's a cheat code. Yes. So we know that we do not want to start IV fluids for this baby. Okay. So now, 1 second. Yes. Right. So no IV fluids for this baby. What if the baby had a little mild tachypnea? Maybe you want to start O2. Now, of course, we know that starting the fluids or not starting the fluids depends a lot on how is the clinical condition of the baby. Okay. So if we see that the baby is really in distress, even I would not be comfortable starting fluids. But if we are talking about a little mild tachypnea, we might still think about OGT. So like I have been very pro feeds in whatever little practice that we have been running. Okay. So there may be a little difference in opinion, but more or less we want to go towards the enteric feeding more than your parenterals. Now, a second case is where we have a full-term baby, 4 kg baby, born to a gestational diabetes mellitus mother. Antenatal screening was difficult, a little difficult delivery, shoulder dystocia. We know that these are big babies. Okay, the baby cried at birth. As per the protocol of IDM, we did a sugar immediately at birth. And at birth, the sugar was 55. Now, what would be your strategy? Do you want to, we know that generally diabetes, we target a little higher sugars because we know these babies are a little prone for hypoglycemia. Do you think you want to give fluids to this baby if the sugar is low? Or would you say try your feeding strategy? Okay, no. I got one no. No. Okay, very good. Yeah. So our strategy is going to be, I think, yeah, no. Because if the sugar is not stabilized, even after giving proper oral feeds and we have hypoglycemia persisting, or we see that the baby has symptomatic hypoglycemia, then we treat accordingly. But at the outskirts, I would not start fluids. Now, coming to another baby, full-term vaginally delivered baby, 2.9 kg birth weight. Antenatal screening was normal. The baby was started on breastfeeds on day 1 of life. The baby was shifted with mother. We room in with the mother. We see that there are some feeding difficulties. The baby is not latching that well. Mother is very anxious. The parents are very anxious. And the child has not passed urine in the first 24 hours. Now, apart from the question of whether or not you want to start IV fluids, I'll ask you a simple thing. The child has not passed urine for the first 24 hours. Will you want to start fluid just because of that? Yeah. So this is the first and most important question, which I think I was asked this on the first day of my residency in NICU, about how much do you wait for the stool passage and how much is the duration that you want to wait for urine. So the clear-cut answer is that stool, we maximum wait for first 24 hours. For urine, you can wait for 48 hours. However, if we know that the baby has not been feeding that well, if we know that there are some issues, like say in this baby, the sugar seemed to be abnormal,
then I would not really wait for 48 hours. I would actively intervene. Now, this active intervention doesn't mean that I want to start IV fluids for the baby. What we'll be doing is make sure that we are giving proper feeds. Now, here, the only answer to the question being yes was because the feeds were started. We first of all prefer our EBM at any cost. The second option would be to go ahead with the formula or a donor milk if available. But after everything, if the sugars of the baby are seeming to be abnormal, that is the time that you might think of IV fluids. But always remember that it is going to be oral feeds, OGT, and then coming to your IV fluids. So IV fluid would never be a first option in any baby. Now coming to a preterm baby, say a preterm baby of 35 weeks gestation has been having leaking PV for 24 hours, 2.4 kg birth weight, no other significant antenatal history. Now we know that we will be sending the septic screening for this child. We will be starting antibiotics for this baby and continuing till the time that we get our negative cultures. Would you or would you not start IV fluids for this baby? You have started IV antibiotics. So what would be your fluid plan? Yeah. So you can see it's a 35-weeker baby. Okay. We can very easily start feeding for this baby. Antibiotics should not be a reason for starting feeds for the baby, right? So as per that, we go ahead with feeds. So you can, if at all needed, our second option is always OG feeds. And after that comes IV fluids, which comes way after that. Okay. So here the answer would be that no, we are not starting IV fluids. Now just turn around the same question a little bit. Okay, this is because this is one question which is very close to my heart personally. We have a preterm baby. We are starting IV fluids for the baby, a 32-weeker baby, 1.1 kg. Many of the times we do start IV fluids on day 1. But otherwise the baby is all okay. Will you start IV antibiotics now? We saw that if IV antibiotics were started, we don't need to start IV fluids. But what if IV fluids are started? Do we need to start IV antibiotics for this child? Just someone, anyone, yes or no? Okay, no. Okay, I think even one no is a very good thing to start with. So the important thing is that personally in our NICU, not just the doctors, but the staff, the entire NICU team has to be confident enough that even if IV fluid is started for the baby, that is not a reason to start IV antibiotics to my baby. I'll make sure all my other handling asepsis part is managed so well that just for an IV access, the baby should not be requiring antibiotics. So the answer is no. I think this is the last thing. So here, I had to put at least one case where the answer was yes. So this is the case, a 30-weeker baby who has been having mild respiratory distress. The baby required bubble CPAP. Caffeine was started. The baby is comfortable on CPAP. Will you start IV fluids? Yes. But at the same time, once the baby is hemodynamically stable, we'll be very proactively going towards trophic feed and then upgrading the feeds as well. So our intention should be either not to start IV fluids in the first place or to make sure that we go on to enteral feeding as soon as possible in that particular baby. So now that we have looked at the entire case scenarios and have got sensitized about the fact that if possible, the first step of fluid management will be not starting fluids. As long as we are very clear about that, now we can proceed to how do we manage the fluids in the babies in whom we are starting them. So the first thing that all of us, those who are attending today's session, know for sure that a neonate is not a small adult nor a small child. A neonate has a completely different body physiology. We know we start the IV fluids for the babies as per their weight, as per their gestational age, as per their postnatal age as well. So two babies will not necessarily have the same
IV fluid requirement. Okay. The other thing which is important is the IV fluid requirement for a term baby and a preterm baby is also way different. Okay, we'll be. I'm so sorry. I'm having a little URTI. Okay, so a term and preterm baby are going to vary in their requirements as well as per the postnatal age. The requirements will change. Also, all our minutest interventions which happen in NICU will also to some degree affect our fluid plans. And we know that any improper electrolytes or fluid management in newborn baby by itself can cause serious morbidities or even sadly mortality in this baby. So we have to be a little careful. Now, this is a general chart of the fluid which is there in body. We know that this is the plasma fluid. This is the fluid which we look at the blood pressure of the baby or the pulses of the baby is this fluid. Okay, what we are also interested is our intracellular fluid, interstitial fluid. So why? Because the dehydration is going to affect here. So we need to make sure that our baby is euvolumic. So not hypo, not hyper. Now, and how do we do that? One thing to remember is that as we can see in this chart, okay, so this is our adult and this is our preterm and term baby. As you can see, the preterm baby has way more total body water. It is in fact more than 80, around 84, 85% is just body water. Okay, and in this baby, the muscle mass is less and the fat mass is even lesser. As compared to this, when we see a term baby, the term baby has a relatively less body water, but still it comes around 70 to 80. What is important to remember is because the preterm baby has a lot of total body water, there is a very high chance of losing this total body water, which we call insensible water losses. We'll be discussing that in the next slide. So our intention is not just in giving our maintenance fluid, but also to make sure that this fluid loss doesn't happen. And there are strategies how that is done. As you can see in adult, the muscle mass increases, the fat mass increases, and the body water composition is much lower than what we expect to see in a newborn baby. Now coming to how do you decide how to give fluids? So there are three major steps in which we decide how to give fluid to the baby. First is that you look at the baby and you estimate whether there are any existing deficits or there is excess. Now, not necessarily every baby will come to your NICU on day 1 post-birth immediately. You might get a baby who comes to you on, say, day 10 of life with sepsis, with dehydration. Many of the case scenarios happen. So it is important that we look at the baby, we take a proper history, we look at the clinical situation of the baby and decide whether there is any existing deficit or any excess. So is there a reason why I need to hold back on fluids, like say my cardiac baby, say a baby who's already very puffed up with fluid, I may go a little lower on the fluids. If my baby is dehydrated, I may have to give a little higher fluid. If none of that is happening, then I just go ahead with our maintenance fluids. So assessing is by this. So every NICU sister knows this. In fact, if a new doctor enters NICU, the sisters are the ones who have been teaching us all these things. A daily weight recording of the baby, whether the baby is losing the weight in the first few days of life as expected for the physiologic diuresis or not. If there is any tachycardia. Now, always remember tachycardia is a very, very big and ominous sign in NICU. Like if you ask me one finding, which I'm very, very seriously expecting to know from any sister, any of the residents who are there in NICU, it is tachycardia. Do not miss tachycardia. You look at the perfusion, you look whether the baby is edematous, you look at the blood pressure of the baby as per the proper blood pressure cuffs. You look at the hepatomegaly, if there is any hepatomegaly in case you are suspecting a fluid overload. Now, in neonates, the common dehydration signs, which are your mucous membrane, your skin turgor, in fact, even your anterior fontanelle is not that reliable. You would more rely on the hemodynamics of this baby. You look at whether the urine output of the baby is okay. And you also look at the systemic examination to make sure that there are no other underlying morbidities, which might require a little, which might be a little challenging for your fluid calculations. So these are all the things which go in assessing the baby. Now, once we have estimated,
second step goes on to our maintenance need calculation. Here you will be looking at the sensible fluid losses, which everyone knows it's through urine, it's through feces, it's the fluid loss, which is obviously visible, as well as the insensible water losses. Now, this insensible water losses are nothing but what you lose from your skin and what you lose from your respiratory tract. We'll be looking at that. And as we know, if a preterm baby has a lot of fluid as compared to a term baby, the preterm baby has a lot of chances to lose that fluid as compared to a term baby. So insensible fluid losses, I'll be very, very vigilant in a preterm baby. And the third thing will be supplying any additional needs or any of the ongoing losses, like say in a surgical baby, if there are aspirates coming, I want to replace those aspirates. So that will be our third step. In 90% of our babies, we are looking at only number 2 for our fluid calculation. Now, how you give this fluid is make sure you always calculate your IV plus oral. So both of them together are going to be the total fluid required for your baby. I'm so sorry. So these are the sensible and insensible water losses, which we already talked about. Now, what I need everyone to know is, see, the skin is responsible for 70% of your insensible water loss. And your respiratory tract, again, 30%, which is still a very huge figure. So we'll look at how do we come... one second. Yeah. So how do we come down on our losses? Always remember, a preterm baby is going to have a very high insensible water loss as compared to your term baby. The reasons are this: not just the larger body water content, but even that the skin barrier itself is immature. Most of these babies have some other underlying morbidities, like say your respiratory distress. A preterm baby by itself may be needing some kind of respiratory support, even if it is a CPAP. So all of those factors, they together contribute to your insensible water loss. Along with that, whatever are our interventions, say our radiant warmer, say our ventilatory support, be it non-invasive, invasive, if there is any skin breakdown, if there are any mucosal defects that we are seeing, all of them contribute to your insensible water loss. So our main question will be, how do we prevent it? So these are just roughly we say that a radiant warmer increases your water loss by 50%. Your phototherapy by itself increases it by 30%. When we give a humidified atmosphere to the baby, your insensible water losses decreases to 30%, which is a good thing. When we give our plastic heat shields, which are what every neonatal nurse knows, that if we have a tiny baby, if we have a very preterm baby with very immature skin, what we put is the plastic wrap. This is to prevent the insensible water loss to whatever extent that we can. And evidence says around 30% is what is prevented. Now, this is again a rough estimate about the insensible water loss. So as you can see, if I have a baby, say 1.75 to 2 kg or more than 2 kg, in the first 0 to 7 days of life, I am having insensible water loss around 15 ml in a day. However, if I'm looking at the same time duration, same postnatal age, for a very preterm baby who is say 500 gram or 700 gram, the insensible water loss for the baby itself is 100. Now, this will be further increased whenever I'm giving a radiant warmer. If the child has some skin issues happening, the loss will be more. So we have to be very vigilant about this. So how do we minimize? Now, this is one of the slides which I will be wanting every nursing participant to just take a picture of. These are some things which are not to be told. These are some things which has to be invariably coming in the care of a preterm baby. So we always use humidified gases. So be it a ventilator, be it a O2 hood, be it a CPAP, always make sure that we have heated and humidified gases. Make sure to maintain a thermoneutral temperature. That is our
are there should be no direct ambient air coming on the baby, no direct draft of AC, no direct fan. The temperature of the baby should be maintained in such a state that there is minimal to no metabolic derangements happening. We increase the ambient humidity of the babies in whom it is required. The thin transparent plastic barrier is something that a nurse, a proper neonatal nurse should do without anyone having to see it. Okay, this is because that baby is your baby. Okay, so you do every possible thing. Now, the local oil application is very controversial. There are studies which say that the amount of sepsis has increased. So we do not follow it. But for resource limited settings, once the baby is out of that sepsis, once the baby is on full feed, we do encourage mothers to start having a little local application. And the most important thing is to make sure that we use minimum of plastic stickings on the newborn skin. There should be a proper newborn skin care. The day that the NICU staff starts telling about slight redness, which is seen on any part of the baby's body, not the big skin issues, just slight redness, that is the time we know that we are now capable of handling the smallest of the babies in our ICU. So these are the things, how will you will minimize the insensible water losses. Now, these are the steps. They may seem a little big, but we'll be running through them very fast because this is what you have been doing day in and day out. So we already discussed that how do we calculate the total fluid intake. Now, the total fluid intake for babies, just a rule of thumb to remember is for very preterm babies, on day 1, we can go as high as 90 to 100 cc per kg per day. Okay, and for a term baby, we can go as low as 60 cc per kg per day. All of us know that every day, the fluid requirement, that is our TFI, goes on increasing by 10 to 20. However, when we are doing the weight of the baby every day, that gives us a clue of whether or not you want to hold back increasing the fluid for this particular baby. If the baby does not have a weight loss as expected by physiologic diuresis, or if you see that some baby has been started on, say, your phototherapy, or the baby is, say, losing more insensible water loss, we may go a little higher. But roughly to remember is that I would start a full-term baby on 60 cc per kg per day and a preterm baby somewhere around 80 to 100 cc per kg per day, and increase the fluid the next day as per the day of life and as per the clinical situation of the baby. Now, electrolytes are not to be added for first 2 days of life. They are always added on after your 48 hours completion. To be a little more particular, after your physiologic diuresis is done. We'll be seeing how much and how the electrolytes are added, but every NICU has their own combinations. So some may use CRL, some may use 3% NS, but it depends on your NICU. Maintenance calcium can be started from day 1 itself. So on day 1, what to remember is a term baby 60 cc per kg per day, a preterm baby 80 to 100 cc per kg per day, and only dextrose. Now it could be 5% or 10%. Generally, it is 10%, except for very, very small babies. Sometimes we have gone on to 5%, depending on whether the baby has been having very high sugars on day 1 itself. Now, always remember that your dextrose concentration, whenever you are using, it is a good idea to calculate your GIR. The target GIR is nothing but your glucose infusion rate. Your target GIR is somewhere between 4 to 6. So now this will look a little too calculative, but we have a tiny bit case. So how much time are we having? Hello. Jason madam, you should tell us how much time. Because I think I was told it's 1 hour for 2 lectures, so I think 10 minutes more. Yeah. So now it's 4:32. You can have 5 minutes more. Okay. Yeah. Okay. Because, so we'll just rush through the important parts then. We'll not go on to the calculation. I think I would suggest you go to the principle, the formula they can get from books. Yes. So the total fluid calculation, and the important thing, the take-home message is going to be that you always subtract your
fluid which is going through your medications, say your inotropes are running, your antibiotics are going, always minus that. And then whatever is the total fluid left, that we decide on how much oral and how much is the remaining IV. So always remember that your medications are also containing fluid. So we should not be going ahead than that. Now, this is the recommendations are 2 to 4 milliequivalent per kg per day of sodium, 1 to 2 milliequivalent per kg per day of potassium, which have to be started after 48 hours. And calcium can be started since day 1 itself. Yeah. So this is what commonly is used, but some centers do use 3% NS as well. So this varies from NICU to NICU. Now that we have seen that how do we start the fluid, the important thing is that you have to keep a watch on monitoring the baby. So an expected weight loss of 5% in term and 10% in preterm babies is okay. However, we have to be more vigilant on how much is the total percentage the baby is losing after birth. Our normal serum electrolytes, our daily weight charting also helps us in deciding whether we are going on the right path with the electrolytes or not. And a urine output of 1 to 3 ml per kg per hour is very, very important for all these babies. Now, because of that time shortage, we'll just skip ahead of this part. This was a calculation part of how do we take it. A 3 kg baby with maintenance fluid will be 60 cc. So that will be 60 into 3. That comes to 180. And you know that you are giving the fluid over 24 hours. So it will come 180 divided by 24, which is 7.5. So that is how much fluid you will be giving the child. Again, to remember, first day fluid is never going to be electrolyte based. So our fluid is going to be D10 based, and you can add calcium in it. Now I didn't realize the time to start with. But the moment you start having fun calculating all these things in NICU, this moment does happen in every NICU sister and doctor's life. So good luck with yours. Now coming to the important nursing pointers. Always, always, always hand washing. There is nothing which can help your kids more than hand washing and strep sepsis. That has to be done. IV fluids should be changed every 24 hours, including the big stock bags. Don't generally keep it beyond 24. It's very difficult to maintain. Each of our fluids should have proper label on the main syringe, the IV line, which is closest to the patient, because we are catering to many babies at the same time, as well as the pump. Important thing to know is what I personally tell every sister is that when we have multiple lines going to the single line, say your inotropes running, your IV fluids running, your amino vein or intralipids also are running, at that time we do label at the patient end. We do label each of the lines on what exactly is running through that. That helps in managing it well. The most important, in fact, I would say the most crucial part of today's talk is the assessment of peripheral IV catheter insertion site. I cannot stress on anything more than this. Our catheter position has to be checked. The patency, the occlusion of the line has to be checked. As I said, the nursing. Yes, ma'am. That's 5 minutes if you can wind up. Yes, ma'am. It's done. I think 3 more slides. So the IV catheter site, whether it is peripheral or central, has to be very, very properly looked at. Now, this is all the IV fluids, dressing splints have to be paid attention to. Sometimes there may be slight pressure coming due to the splints. So that has to be looked at and it has to be loosened. What we do is we never put dressing circumferentially to make sure that we are not occluding the arterial supply to the distal part of the limb. One of the most important thing is documentation. So assessment and documentation of hourly input and output is very essential for our NICU babies. And also before starting any infusion, always check that it is the right patient, it is the right medication, it is the right, whether it is IV, IM, how exactly it has to go. So it is the right route, it is the right dosage, and all those things have to be checked at and documented. So this is one other important and very essential thing. Most of our centers catering to very small neonates have central lines. So make sure that you scrub the hub.
So this is not just washing the hands and having strict asepsis, but we generally have a central line tray separate, so that we don't have to handle multiple things. Make sure that the dressing is properly integrated, the integrity of the dressing is proper. Transparent dressings, unless they get soiled, they don't need to be changed before 7 to 10 days. The site has to be cleaned, and always every day, first thing that the doctor also does, in whatever seniority level they are, is they will assess the site whether or not we can remove the site. Okay, always remember that scrub the hub. This is scrubbing the hub properly before we handle a central line. I think we can skip the special scenarios, ma'am, because these are more of particular ones. What I would like to see is our surgical cases. There are certain special scenarios. Always, as we know that the insensible water losses are higher when the skin integrity is disturbed. So if you have a baby with, say, an abdominal wall defect, like a phallocyl, gastrochisis, or in fact, even your meningomyelocele, all those babies may require a little higher in, fluid, because their insensible water loss is going to be higher. For any post-operative baby or any baby with surgical abdomen, keep a very close watch on how much is the RT aspirates which are coming, because this monitoring is important and the replacement has to be done according to that. The pre-operatively, before you send any baby to OT, we need to make sure that the hydration, the electrolyte, and the hemodynamic status of the baby is optimum, so that we have a very good course post-op also. And again, I can't stress enough on documentation. At every single step for fluids, do document, so that we know that whether we are needing to go higher or lower on our fluids for the baby. So I think we can stop at that point. And not to mention, they are Thank you, already Dr. doing a Sandhani. great job. This is just a little brush up of what is already happening in our ICUs. Thank you, Dr. Sandhani. I Thank think you so much. that is a very vast topic, and you can have a full day Yes. workshop or a lecture on IV fluids in newborn. So I think the basic thing you have covered is basically that you should not give every baby does not require IV fluids. Every baby Yes. does not require. So think that IV fluid is the last option. We don't give it. That is not the first option. And then there are special situations. As long as you understand the basic principles of what IV fluids is, then I think everything else is fine. So without much ado, I think I'll pass on to the next speaker. He was speaking of arriving of the newborn. I think, but he didn't arrive. So now we are arriving of a star neonatologist. So Samir, over to you. Samir. So Samir Sheikh, you have already been introduced. So is Samir there? Yeah, Samir. Yes. Samir is there. Yes. So I hope you can see my screen and I'm audible. Yes, yes. You can go ahead. Thank you so much. I'm just overall turning off my video so that to stop distractions here and there. I'm such a handsome guy. So overall, we'll start with this. We'll talk about arrival of a sick neonate. My journey will be in 3 divisions. So first thing will be preparedness. Second thing, when the actual baby arrives, and how we can master ourselves, how we can be much more and more better. So how to become much more better, that is the last and final part. If time permits, we'll go there. So in everything, whether it's preparedness when baby arrives, or when you want to become more and more better, okay, everything this should be coined in your mind, that it is temperature, airway, breathing, circulation, drugs, TABCD. TABCD के अलावा और कहीं नहीं जाना है, बस ये याद रखना है. इफ यू आर वर्किंग इन न्यूबॉर्न यूनिट, ये आपके दिमाग में इम्प्रिंट होना चाहिए, किसी ने ड्रिल करके घुसाना है. और जैसे टैटू परमानेंट हो जाता है, ऐसा एक परमानेंट ब्रेन में टैटू बनाना है TABCD का. तो ऑलवेज इट इज T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, A फॉर एयरवे, B ब्रीदिंग, C सर्कुलेशन, D इज ड्रग्स और डेक्सट्रोज. ओके, तो हम TABCD के आसपास घूमते रहेंगे सब चीज के लिए. तो फर्स्ट सेक्शन इज प्रिपेयर्डनेस व्हेन यू नो द अराइवल. तो किसी ने कॉल करके बोला कि भाई एक बेबी आ रहा है, फाइंड एक बेड रेडी करो सिस्टर, और समथिंग लाइक दैट.
कि मुझे एक कॉल आया गायनेकोलॉजिस्ट का कि समीर एक डिलीवरी कॉल के लिए जाना है, और मैं सिस्टर स्टाफ को बोलता हूँ मैं ऐसे डिलीवरी कॉल के लिए जा रहा हूँ, आप एक बेड रेडी करके रखो। सो यू नो कि बेबी आने वाला है, आने वाला है, तो बेसिक 3-4 क्वेश्चन पूछो। आप 2-4 से ज्यादा क्वेश्चन किसी को पूछो ना, बंदा इरिटेट हो जाता है। तो आप डॉक्टर को पूछो, आप अपने हस्बैंड को पूछो, वाइफ को पूछो, बच्चे को पूछो, 4 से ज्यादा क्वेश्चन किसी को भी पूछते हो ना, इरिटेट हो जाएगा। मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को 4 के या 5 क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे दूसरी बार डिलीवरी कॉल के लिए नहीं बुलाएंगे। सो ऑलवेज पूछ लो एक मोटा मोटा सा कि टर्म आएगा प्री टर्म आएगा। साथ में हमारे पास बहुत सारे IUGR बेबीज भी आते हैं, तो साथ में ये पूछ लो बेबी का वजन कैसा है, बेबी छोटा आ रहा है बड़ा हो रहा है, बस इतना ही पूछना है। टर्म है कि प्री टर्म है, छोटा है कि बड़ा है। अगर पता चलता है पूछ लो कि सपोर्ट किस टाइप का चाहिए। मतलब सपोर्ट जनरली 2 टाइप के हम देखते हैं, वन इज रेस्पिरेटरी सपोर्ट, तो बेबी ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है, इंट्यूबेटेड आ रहा है, नहीं इंट्यूबेटेड आ रहा है। अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं इंफॉर्मेशन मिलती है तो एक गोल्डन प्रिंसिपल हम यूज ये करते हैं कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बट एक्सपेक्ट द बेस्ट। तो अब यही मान के चलो कि हाँ बेबी जब आएगा तो वो तो एकदम रोता पिटता बढ़िया सा रूम एयर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करता हुआ आएगा, बट प्रिपेयर्ड ऐसा रहना है कि बच्चा कंप्लीटली कोलैप्स स्टेट में आएगा, ओकेजनल हार्ट नो रेस्पिरेशन टाइप्स। तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं? तो सपोर्ट पूछ लो। थर्ड थिंग बस ये पूछ लो कि एक आ रहा है कि 2 आ रहे हैं। बहुत सारी बार हाई रिस्क केस है, किसी ने बताया पर कोई ये बताना भूल गया कि ये तो ट्विन प्रेगनेंसी है इसलिए हाई रिस्क केस है, और पता चला कि एक बच्चा आ गया उसके बाद 2 आ रहे हैं। या फिर ट्रांसफर इंक्यूबेटर में जब आप देखने गए कि चलो बेबी रिसीव कर लेते हैं, पता चला कि उस टाइम पे यहाँ तो 2 बच्चे अंदर लेटे हुए हैं, और इसमें से एक अम्बू चल रहा है, एक ऑक्सीजन पे लगा हुआ है। सो ऐसा सरप्राइजेस नहीं चाहिए हमें। तो ऑलवेज देख लो कि सपोर्ट कौन सा चल रहा है, बेबी सिंगल है कि मल्टीपल है। टी इज फर्स्ट टेम्परेचर, हमेशा वार्मर ऑन करके रखो, एटलीस्ट 25-30 मिनट से पहले ऑन करके रखो। ये जनरली ओपन केयर के ऐसे मोड्स आपको दिखेंगे, तो जिसमें आपको हीटर पावर कितना है वो आपको दिखेगा। स्किन का टेम्परेचर आप यहाँ फ़ारेनहीट सेंटीग्रेड जिस तरह सेट करते हो उस तरह से मिलेगा। इसमें आपको 3 मोड मिलेंगे। दिस इज 25% प्री वार्म, दैट मींस कि हीटर आउटपुट 25% रहेगा, पर ना उससे ज्यादा होगा ना कम होगा, और कंटिन्यूसली हीटिंग चलती रहेगी। क्योंकि बाकी दोनों जितने भी मोड है, मैनुअल या स्किन मोड, उसमें ऐसा है कि अगर अलार्म बजता रहता है और टेम्परेचर कम होता रहता है, या आप उसको मैन्युअली उसको 100% पे या किसी पे रख देते हो, देयर इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म व्हिच इज इनबिल्ट। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद वो ओपन केयर शट डाउन हो जाएगा। और अब मेजोरिटी जितने भी अच्छी क्वालिटी के सारी अच्छी ब्रांड के ओपन केयर आते हैं उसमें ये इनबिल्ट सिस्टम है जस्ट फॉर पेशेंट सेफ्टी, कि अगर टेम्परेचर प्रोब निकल गया, बेबी नीचे लेटा हुआ और हीट आती रहेगी, बेबी जल जाएगा। सो बेबी को अगर हार्म नहीं हो, इसलिए आफ्टर सम टाइम वो बंद हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि उसको एक प्री वार्म मोड में डालो, ताकि हीट बढ़े भी नहीं कम भी नहीं हो, पर ओवरऑल 15-20 मिनट्स में आपका बेड वार्म हो जाए। सारे लिनन को रेडी रखो। जो भी आपको चाहिए, बेबी को रिसीव करना होगा, मोस्ट ऑफ टाइम बेबी सॉल्ट लिनन में आएगा, बेबी दूसरे मैटरनिटी होम के लिनन में आएगा। बहुत सारे बच्चे मदर या पेरेंट्स अपने उसमें रैप करके आएंगे। ओवरऑल क्योंकि ये जो हम TABCD का प्रिपेयर्डनेस है, ये चेंज नहीं होता अगर बेबी डिलीवरी रूम से आ रहा है, किसी और हॉस्पिटल डिलीवर होके आ रहा है, ये जस्ट आपके इमरजेंसी रूम में आ गया, मदर बेबी को लेके आ गई, वो इमरजेंसी वाला बेबी आ गया, तो अगेन TABCD हमेशा सेम रहेगा। बेड रेडी रखो, नेस्ट बना के रखो, जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी बेड साइड। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि इस तरह से आप उसको रेडी करके रखो कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे BP का रेडी करके रखा है, हमने सैचुरेशन प्रोब रखा है, हमने ECG लीड्स लगा के रखी है। पता चला था बेबी ऑक्सीजन पे आने वाला है, तो भाई हमने हुड रखा है या नेजल प्रोंग जो भी रखना चाहो, एक छोटा सा नेस्ट बना के रखा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता था बेबी का वेट कितना है। शोल्डर रोल रखा हुआ है, दिस इज जस्ट अ ब्लैंकेट, जब बेबी स्टेबलाइज होगा तो हम कवर करके उसको हम छोड़ देंगे। तो ओवरऑल ये प्रिपेयर करके रखो। देन A फॉर एयरवे। एयरवे में सक्शन हमेशा रेडी करके रखो। आप मैनुअल सक्शन यूज करें तो उस तरह से, आप वॉल माउंटेड सक्शन यूज कर रहे तो उस तरह से, सक्शन मशीन यूज कर रहे तो उस तरह से सक्शन रेडी करके रखो। जनरली जो भी सक्शन हम करने वाले हैं जनरली माउथ या नोज का होगा, तो हमेशा वाइड बोर सक्शन कैथेटर यूज करो, अराउंड 12 या 14 फ्रेंच का।
बहुत छोटे छोटे सक्शन कैथेटर समथिंग लाइक 6 या 8 बहुत सारी बार बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करते हो और सक्शन एडिक्वेट होता नहीं है। तो इसलिए बहुत छोटे सक्शन कैथेटर प्लीज यूज नहीं करो, बड़े 10, 12, 14 साइज फ्रेंच के सक्शन कैथेटर यूज करो। अगर बेबी ऑक्सीजन सपोर्ट पे आ रहा है तो अप्रोप्रिएट साइज का ऑक्सीजन का फ्लो मीटर रखो। तो जनरली फ्लो मीटर है ना, वो 2 कैटेगरी में आते हैं, हाई फ्लो एंड लो फ्लो। तो अगर पता है कि बेबी नेजल प्रोंग पे आ रहा है या बेबी रूम एयर पे आ रहा है, तो या फिर थोड़ी सी डिस्ट्रेस से पता नहीं हम आपके पास भेज रहे हैं, ऐसा टाइप का गोल गोल सा कॉल है, पर हाँ पता है कि बेबी एटलीस्ट इंट्यूबेटेड नहीं है, वेंटिलेटर पे नहीं आ रहा। तो ऐसे बेबी के लिए आप लो फ्लो मीटर रख सकते हो जिसमें ग्रेजुएशन 0.5 लीटर्स, 1 लीटर, 1.5 लीटर, मैक्सिमम 4.5 लीटर पे यहाँ काम खत्म हो गया। ये हाई फ्लो मीटर है। जनरली हाई फ्लो मीटर जब आप हाई फ्लो से आपको ऑक्सीजन देना उसमें यूज होता है, तो जैसे बेबी को आपको हुड से ऑक्सीजन देना है, रिससिटेशन लगेगा, तो उसमें हमें हाई फ्लो मीटर चाहिए जिसमें मैक्सिमम फ्लो आप देख सकते हो कि इट कैन गो अप टू 40 लीटर्स पर मिनट। तो इसमें ग्रेजुएशन 2, 4, 6, 8 ऐसे बढ़ता जाएगा, जबकि यहाँ तो 4 लीटर पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो अप्रोप्रिएट साइज, अप्रोप्रिएट लो फ्लो या हाई फ्लो वाले मीटर आपके पास होने चाहिए, वो आप रेडी करके रखो। ए के लिए ऑक्सीजन डिवाइस रेडी करके रखो। ओके, आपको कौन सा ऑक्सीजन डिवाइस चाहिए, कि आप बेबी नेजल प्रोंग पे होगा तो नेजल प्रोंग पे रखेंगे। ये हमारा देसी जुगाड़ है जो हम जनरली करते हैं। जब बेबी नेजल प्रोंग पे होता है तो बेबी को अगर नाक में प्रोंग चुभे नहीं, तो व्हाट वी डू है कि हम नियोनेटल साइज की जगह पीडियाट्रिक या एडल्ट साइज का कैनुला यूज करते हैं, पर उसके प्रोंग कट कर देते हैं। वी कट इट प्रोंग फ्लश टू द ट्यूब, सो वो एक 2 बड़े होल रह जाते हैं वहां पे, और उस होल को मूंछ की जगह मूंछ की तरह बच्चे को लगा देते हैं। तो दैट बिकम्स अवर नेजल प्रोंग। तो ऑक्सीजन चलता भी रहता है, बेबी को इंजरी भी नहीं होती, नेजल सेप्टम की इंजरी नहीं होती, नाक सूखता नहीं है, तो अंदर सिक्रेशन का डेसिकेशन भी नहीं होता। But if you want to go reliable oxygen with a little on the higher side flow, then you can use Ram's cannula, जिसमें ऐसे कैनुला आता है जो कैनुलेट के साथ आप लगा सकते हो, और you can use hood. But always see to it that area is well lighted, because जब तक well lighted area नहीं होगा, आपको बहुत सारी बार अटैचमेंट के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, बेबी के नोज के अंदर देखना है, माउथ के अंदर देखना है, आपको बहुत सारे असेसमेंट के इश्यूज आएंगे। इसलिए ऑलवेज सी टू इट कि आप बेड ऐसी जगह बनाओ जहां पे लाइट बहुत अच्छे से आ रही है। बी इज फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए रिससिटेशन इक्विपमेंट्स हमेशा आपके रेडी होने चाहिए। सो इट इज गुड आइडिया, जैसे हम करते हैं मेरे यूनिट में, तो हम ऐसी रिससिटेशन की ट्रे बना के हमने रखी हुई है, ऐसी बैग बना के रखी हुई है, तो जिसमें सारी चीजें हैं। तो हर बार जब रिससिटेशन चाहिए तो मुझे बोलना है कि सिस्टर जी ये सिक के मुझे रिससिटेशन चाहिए, या सिस्टर मुझे बेबी को इंट्यूबेट करना है, या सिस्टर मुझे बैग एंड मास्क दो, तो सिस्टर्स को एक चीज लेने के लिए भागना नहीं पड़ता, बस उसको जाना है और ये डब्बा लेके आना है। ये डब्बा डेली चेक होना है, ये डब्बा डेली उसको क्लीन होना है, और ये हमेशा रहेगा। तो उसमें अम्बू बैग होनी चाहिए, अम्बू बैग का चेकिंग होना चाहिए, सारे इक्विपमेंट चेक होने चाहिए। अप्रोप्रिएट मास्क सिलेक्ट करना सीखो। जैसे जनरली मास्क जो हम यूज करते हैं वो प्री टर्म टर्म ऐसे 2 साइज होते हैं, इससे एक छोटा भी आता है। तो फॉर प्री टर्म टर्म तो आइदर ऑफ द दोनों में से कौन सा मास्क आपको चाहिए, जैसे हमने बोला 3 क्वेश्चन, तो छोटा बड़ा बेबी कौन सा है, उस तरह से। रिजर्वायर होना चाहिए, ओपन या क्लोज, जो भी आपके डॉक्टर प्रेफर करते हैं। लेरिंगोस्कोप विद अप्रोप्रिएट साइज ब्लेड। देखो बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी कर दोगे, जैसे आपको 1 किलो का बेबी आने वाला है, पर आप 500 ग्राम का बेबी से सोच के लेकर 3 किलो बेबी सोच के सब कुछ इकट्ठा कर दोगे, चीजों का क्लटर हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा नहीं करो, अप्रोप्रिएट साइज की चीजें ढूंढना सीखो। तो कौन से बेबी में कौन सी साइज की ब्लेड लगेगी आपको एक्सपीरियंस से आ जाता है। नहीं समझ आता, आप अपने सीनियर सिस्टर से पूछो, अपने डॉक्टर से पूछो। सेम में ईटी कौन सी साइज की चाहिए होगी। ओके, मेरा बेबी 2 किलो के आसपास का है, मुझे 3 या 3.5 की एक ईटी चाहिए, पर मैं 2 से लेके 5.5 तक की सारी इकट्ठी करके बैठा हूँ, और मैं पत्ते की तरह फिर ढूंढ रहा हूँ। जब डॉक्टर बोले ईटी दो, 3 नंबर का ईटी दो, और फिर मैं उस टाइम पे पत्ते की तरह एक 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 देख के फिर बिछा के उसको देख रहा हूँ। तो ऐसा प्लीज नहीं होना चाहिए। तो आपको हमेशा साथ में चीजें रखो, तो एडिशनल चीजें हटा दो। फिक्सिंग की टेप, जो नेजल कैनुला नेजल प्रोंग अटैच करते हो तो उसके लिए, ईटी अटैच करते हो उसके लिए, जैसे एक फिक्सिंग का ऐसा छोटे पहले से ऐसे अटैचमेंट काट के रखो। जैसे यहाँ पे हमने डायनाप्लास काट के रखा हुआ है, ताकि उस टाइम पे आप सीजर लेके भागो नहीं, बिकॉज सीजर है, ये ड्रेसिंग्स है, प्लेंटी ऑफ टाइम दे आर नॉट वेरी स्टराइल। बहुत सारी जगह वो स्टाइल एरिया पे रखे भी नहीं होते हैं, उसे धूल जम गई है। आपके अच्छे से वॉश हैंड गंदे होंगे, आप उस कट करके वही चीज आप बेबी को स्टिक करोगे,
अब वही इन्फेक्शन बेबी के पास ले जाओगे। दिस इज गुड आइडिया कि ये इस तरह से आप अलग से उसको कट करके रखो। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोंट डिस्कार्ड और लॉक अवे अदर साइजेस। ओके, चांसेस है कि बेबी 2 किलो का आया, मुझे उसके लिए 0 साइज का ब्लेड चाहिए, पर समहाउ कोई माल फॉर्मेशन है जिस वजह से बेबी का माउथ इतना छोटा है कि मुझे 0 साइज से मैं इंट्यूबेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, अंदर ही नहीं जा पा रहा हूँ, तो मुझे 0 की चाहिए होगी ब्लेड। तो उस टाइम पे आपको ब्लेड ढूंढने भागना नहीं पड़ना चाहिए। सेम में एंडोट्रेकल ट्यूब, मुझे पता है मुझे 3 साइज की ट्यूब से होगा, पर अब कुछ ऐसी सिचुएशन है, सिक्रेशन ऐसे फंसे हुए हैं, इडीमा इतना सारा है कि अब मैं 3 साइज से इंट्यूबेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अब 2 साइज की ट्यूब चाहिए। तो उस टाइम पे उस ट्यूब को लेने भागने के लिए, कबर्ड खोलने के लिए या इनएक्स से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए जो भी चीजें हैं उसको साइड में रखो, पर उसको कंप्लीटली हटा नहीं दो, कंप्लीटली लॉक एंड की में नहीं रख लो। वेंटिलेशन के लिए रेडी हो जाओ। अगर बेबी वेंटिलेटर पे आ रहा है या वेंटिलेटर एसओएस लगने वाला है, पता नहीं है कि शायद लगेगा, तो पूछो कौन सा वेंटिलेटर, बिकॉज हर एक डॉक्टर की चॉइस होती है। प्लस कुछ वेंटिलेटर है जो कुछ वेट तक ही सपोर्ट कर पाते हैं, कुछ वेंटिलेटर है जो कुछ मोड में अच्छे से काम करते हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर को पूछो कौन सा वेंटिलेटर, सपोर्ट कौन सा लगेगा, इन्वेजिव की नॉन इन्वेजिव सपोर्ट लगेगा। कि फॉर एग्जांपल आपको उसको सीपैप देना है और आप सिंपल हडसन नेजल कैनुला या रैम्स कैनुला यूज करने वाले हो, और आप वाई पीस भी लगा दोगे, उसमें आप बाकी अटैच भी लगा दोगे, आप फ्लो सेंसर भी लगा दोगे, तो अल्टीमेटली वो चीज आपको हटानी पड़ेगी, क्लटर होगा, कोई आप पे गुस्सा करेगा। बहुत सारी बार वेंटिलेटर टू वेंटिलेटर ट्यूबिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो एसएलई वेंटिलेटर जिन्होंने यूज किया उनको पता है उसमें रिस्ट्रिक्टर और प्रेशर लाइन अलग से लगते हैं, जबकि जिन्होंने ड्रैगर वेंटिलेटर यूज किया, विच इज मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट सिंपल वेंटिलेटर टू यूज, उसमें ऐसा कुछ नहीं लगता। तो इसलिए आप कौन सा वेंटिलेटर यूज कर रहे हो, हिसाब से ट्यूबिंग कौन सी लगेगी, तो वो भी आपको साथ में पूछना है। बेबी अगर बबल सीपैप रखने वाले हैं, ऐसा प्लान है, और साथ में वेंटिलेटर ट्यूबिंग ओपन कर दोगे, वेंटिलेटर ट्यूबिंग 6,500-7,000 रुपए की है, वो आपके यूनिट का और आपका ही नुकसान है। गेट रेडी टू चेक ऑक्सीजनेशन लेवल। ओके, तो सी टू इट दैट यू चेक मॉनिटर बिफोर हैंड, मॉनिटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है चेक करना है। सेम में चेक करना है कि SpO2 प्रोब अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। SpO2 प्रोब हमेशा इस तरह से दिखेगा, ऐसा आएगा। और तो देखो कि जब भी आप उसको ऑन करते हो, एक में लाइट जलेगी, एक में लाइट नहीं जलेगी, तो ये उसका ट्रांसड्यूसर है, मतलब जहां से लाइट छूटेगी, ये उसका रिसीवर है जो लाइट को कैच करेगा। तो जब भी आप बेबी को अटैच करोगे, देखो कि ट्रांसड्यूसर और रिसीवर एक दूसरे के सामने ही लगेंगे एग्जैक्टली। तो ऐसे ही होना चाहिए। तो सी टू इट के यहाँ अच्छे से आपको लाइट आ रही है नहीं आ रही है, आप चाहो तो अपने खुद की फिंगर पे चेक करके देखो कि ये लाइट अच्छे से सैचुरेशन रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई चेक कर लो, यूनिट बड़ा बिजी है, पता नहीं है कितने सिलेंडर यूज हो गए, कितने हैं नहीं है, तो वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी टू इट के आप हमेशा अपने ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई का जो या सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई का जो अलार्म है उसको ऑन रखो। ये तो बहुत बचता है, हमने बंद ही कर दिया, ऐसा प्लीज नहीं करो। अलार्म्स की खुद की इंपॉर्टेंस है। आज यूनिट तो बहुत स्टेबल है, 10 बच्चे पर सारे बच्चे फीड्स पे हैं। तो हमने लास्ट टाइम ऑक्सीजन 2 दिन पहले यूज किया था, तो हमें पता नहीं है 2 दिन में क्या हुआ, ऑक्सीजन लीक हो गया नहीं हो गया। तो ऑलवेज चेक ऑक्सीजन सप्लाई। फॉर एक्सपेक्टेड वेंटिलेशन, जो लोग एयर कंप्रेसर यूज करते हैं, सेंट्रल एयर सप्लाई यूज करते हैं, तो देखो कि आप एयर कंप्रेसर को ऑन कर दो, बिकॉज ये ऐसी चीज जो हमेशा ऑन नहीं रहती है। बेबी इन्वेजिव वेंटिलेशन या नॉन वेंटिलेटर, जब वेंटिलेटर हम यूज करेंगे तब हम इसको ऑन करेंगे, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो सी टू इट कि आप इसको ऑन करो। और उस टाइम पे जब बेबी सिक है, उस टाइम पे एक बंदा सिर्फ ये स्विच ऑन करने के लिए भाग रहा है नहीं, हमें सारे हेल्पिंग हैंड चाहिए होंगे। सर्कुलेशन चेक करना है तो उसके लिए हमें बीपी चेक करना है। तो सी टू इट अगेन मॉनिटर को चेक करो कि मॉनिटर पे बीपी ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेंसर केबल में तो कोई गड़बड़ नहीं है। अगेन अप्रोप्रिएट साइज बीपी कफ ढूंढना सीखो। अप्रोप्रिएट मतलब कैसा, तो देखो जैसे साइज 2 और साइज 3 के कफ मैंने रखे हुए हैं, तो इसमें है ना हमेशा रेंज होगी। ये रेंज पता है किसकी है, ये रेंज डायमीटर की है। तो 4 to 8 सेंटीमीटर डायमीटर का बेबी का हाथ है तो 2 साइज का कफ लगेगा। 6 to 11 साइज का है, ओके, तो 3 साइज का कफ लगेगा। जल्दी आप ऐसे याद रख सकते हो कि 1 किलो छोटा बेबी में साइज 1, 1 to 2 kg 2, 2 to 3 kg 3, more than 3 kg 4। तो 1-1 किलो में एक नंबर बढ़ता जाता है। 1 किलो तक का 1,
2 किलो तक का 2, 3 किलो तक का 3, 3 किलो से ऊपर वाले सब 4 या 5 नंबर का कफ लेंगे, तो अप्रोप्रिएट साइज कफ लो, बट अगेन बाकी कफ को फेंकने देना। डी फॉर डेक्सट्रोज, डी फॉर ड्रग्स। चीजों को रेडी कर रहे हो, कीप थिंग्स रेडी फॉर आईवी लाइन इंसर्शन एंड सैंपलिंग। दिस हाउ जनरली वी डू। हम एक ऐसा एक ट्रे बना के रखते हैं जिसमें सैंपलिंग का, आईवी लाइन का सारा छोटे मोटे सारे सामान होते हैं, इंक्लूडिंग अल्कोहल स्वैब, प्लेन कॉटन, डिफरेंट वैरायटी के कैनवास, डिफरेंट वैरायटी की नीडल्स, कुछ एम्प्यूल्स, सो दैट हम उसमें अगर हमें कुछ सैंपलिंग करना है, प्लस इसमें एसओएस ब्लड कल्चर बॉटल ऐड हो जाती है। प्रिफरेबली अगर आपको बहुत अच्छे से बेबी की डिटेल्स पता है तो कोशिश करो कि आईवी फ्लूइड भी रेडी कर लो, बिकॉज जब भी आप आईवी फ्लूइड रेडी करोगे, जैसे मैम ने कहा उस तरह से आपके पास हैंड वॉशिंग, आपको हैंड हाइजीन करना है और बहुत अच्छे से उसको एसेप्टिकली प्रिपेयर करना है, तो उसमें आपको 5-7 मिनट लग जाएंगे। जब बेबी सीरियस है और हमें मल्टीपल हेल्प चाहिए, उस टाइम पे 1 या 2 नर्सिंग स्टाफ अगर बिजी हो गए आई फ्लूइड बनाने में, तो मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड ही नहीं बचेगा। और हमेशा बच्चे बचते हैं टीम वर्क से, अकेला बंदा कभी कुछ नहीं कर पाता। अगर कंफ्यूजन है, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या है, और आपको आई फ्लूइड रेडी करने की जरूरत पड़ती है और आपको किसी तरह से कोई और डेटा नहीं मिल रहा, बेस्ट इज टू कीप D10 रेडी। डेक्सट्रोज 10% का ड्रिप बना के रखो, भले ही फेंकने में जाए, ओवरऑल मैक्सिमम 400 रुपए का खर्चा होगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, बट D10 आप रेडी करके रखो, भले ही हमें फेंकना पड़े। अगर कंफ्यूजन है, ये रेडी रखो। बट ऑलवेज एंटीबायोटिक, बोलसिस, सर्फेक्टेंट, आइनोट्रोप्स, ये सब कुछ सेकंड प्रायोरिटी पे आता है, इसको किसी को भी रेडी करके रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हम आईवी फ्लूइड के बाद सेकंड स्टेप में हमेशा बना पाएंगे। सो इस तरह से हम प्रिपेयर हो गया, हमें पता चला बेबी आने वाला है। नाउ व्हेन द सिक बेबी अराइव्स, ओके, अब बेबी टपका हमारे पास, अब हम क्या करेंगे? तो कुछ बेसिक रूल्स को ऑलवेज फॉलो करो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल्डन रूल है, अगर आप आईसीयू में काम कर रहे हो, हैव नर्व्स ऑफ स्टील, महेंद्र सिंह धोनी बन जाओ। प्लीज डोंट पैनिक। पैनिक कभी नहीं करना है, चिल्लम चिल्ली कभी नहीं करनी है, भागम दौड़ी कभी नहीं करनी है। इसलिए सिल्वर रूल ये है कि डोंट ट्राई टू बी ए हीरो। मुझे सब आता है, मैं सबसे सीनियर स्टाफ हूं, मैं सब कर लेती हूँ, मैं आई फ्लूइड बनाऊंगी, मैं वेंटिलेटर ट्यूबिंग भी अरेंज करूंगी, मैं आईवी लाइन भी लगाने में हेल्प करूंगी, मैं सैंपलिंग भी करवाऊंगी, मैं एंटीबायोटिक प्रिपेयर करूंगी, मैं आइनट्रोप भी लगाऊंगी, मैं टर्न ऑन ये भी करूंगी, वो भी करूंगी। नो, डोंट ट्राई टू बी ए हीरो। हीरो कोई नहीं हम यहाँ पर। ओके, सो हर एक का अपना 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 काम है, सब अपना अपना काम करेंगे। इसलिए प्लेटिनम रूल ये है कि नेवर फील अशेम्ड इन आस्किंग फॉर हेल्प। मैं कितना भी सीनियर हूं, मैं कितना भी वेल एक्सपीरियंस क्यों नहीं हूं, मुझे हेल्प चाहिए ही होगी, मुझे हेल्प मांगने में शर्म नहीं ही आनी चाहिए। ओके, आपने आपने सारी मशीनरी देखी है ना, मशीनरी एक नट खुल जाता है ना, इवन BMW में से भी, ओके, तो भी गाड़ी आवाज करेगी। नट 10 रुपए का है, सबसे इनसिग्निफिकेंट है, सबसे सस्ता है, पर वो पूरी गाड़ी को खराब करता है। तो इसलिए हमेशा हेल्प लो, बिकॉज वो छोटा पीस यू नेवर नो कि बेबी को बचा लेगा। तो हर एक स्टाफ, हर एक बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेवर एवर फील अशेम्ड इन आस्किंग फॉर हेल्प। तो एवरीवन शुड नॉट ट्राई टू डू एवरीथिंग। रोल असाइन करो, कौन क्या करेगा, सबको सब नहीं करना है। टेक हैंडओवर बेबी प्रॉपरली। जब बेबी आता है, बेबी का हैंडओवर प्रॉपरली लो। बेबी सीख के ऐसे करके उसका गर्दन कहीं लटक रही है, हाथ के लटक रहा है, टांग के लटक रही है, हमने ऐसे ही उसको बीच में से पकड़ के ऐसे ही बेड पे फेंका, ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट बी वेरी हार्श, बी वेरी 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 जेंटल। हैंडओवर ऑल्सो मीन्स बेबी के सारे अटैचमेंट्स, कौन सी लाइंस लगी हुई है, कौन सी इन्फ्यूजन चल रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल लो। ऑनगोइंग सपोर्ट की डिटेल लो कि बेबी जब आया हमारे पास, चांसेस बेबी वहां पे कोई और वेंटिलेशन पे था, सिर्फ ट्रांसफर के लिए कुछ और वेंटिलेशन चल रहा है, कोई और आइनोट्रोप चल रहे थे तो वही आइनोट्रोप यहाँ पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो फ्लूइड हिमोडायनेमिक सपोर्ट क्या चल रहा है। ऑलवेज कलेक्ट ऑल द अकम्पनिंग पेपर्स लाइक ट्रांसफर समरी, ट्रांसफर लेटर, जो भी फाइल का बेबी आता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन होंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, बेबी के एक्सरेज अगर साथ में आते हैं, अपनी अकम्पनिंग पेपर्स का अच्छे से ओवरलो, क्या 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 आपको हैंडओवर मिला है। बिकॉज जब बेबी स्टेबल करके ढूंढने बैठोगे, चांस है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक से ही गुम हुआ पड़ा है। तो इसलिए, और उस पेपर को हमेशा संभाल के रखो। बेबी यहाँ फेंका पेपर, यहाँ फेंके, ऐसा प्लीज नहीं करो। ओके, हेफाजत काम नहीं करो। अकम्पनिंग नया बेबी का पेपर यही है, इस कॉर्नर में एक जगह डिसाइड करो, वहां पे रखो। सेम में बहुत सारे बेबीज ऐसे जो सिक हैं, जो किसी और हॉस्पिटल से आपके पास शिफ्ट होते हैं, पेरेंट्स की बहुत सारी अपने अपने इमोशंस हैं। किसी ने उसको कोई धागा बांधा हुआ है,
किसी को रिलीजियस बैंड पहनाया हुआ है, कोई नेक पे कुछ लगा हुआ है, सी टू इट के हमेशा उस पेरेंट्स के उस विश को, उस इमोशन को आप रिस्पेक्ट दो। तो रिलीजियस बैंड कौन से लगे हुए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मांगते हैं कि नहीं हमें बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड जब निकल जाता है तो हमें वापस चाहिए, उसका हमें उसका कुछ बरियल होता है, रिचुअल होता है, हमें उसको नदी में डालना होता है या हमें उसको जमीन में गाड़ना होता है। तो ये भी जो भी रिलीजियस बैंड, बिलोंगिंग्स, जो भी रिचुअल है, उसका वो पेरेंट्स के इमोशंस है, उसको भी उतना इंपॉर्टेंस देना है। तो आपको बेबी में ऐसा नोटिस करते हो, पूछ लो कि ये क्या है और मुझे इसका क्या करना है, और मुझे इसका निकालना है तो निकाल के क्या मैं उसको डस्टबिन में फेंक सकती हूँ कि मुझे आपको रिटर्न करना है। अगेन हम TABCD पे आ जाएंगे। टी, सबसे पहले सेंसर अटैच करो। साइट शुड बी अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब साइट ऐसी ढूंढो कि जो आपके ना तो एग्जामिनेशन के बीच में आए, ना एक्सरे के बीच में आए, ना कभी सेंट लाइन जैसे अम्बिलिकल लाइन या पिक लाइन इंसर्शन के बीच में आए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट, अगर बेबी को आपको सुपाइन रखने का प्लान है, तो आपकी रिब केज के जो कोस्टल मार्जिन है उसके जस्ट नीचे, या तो लिवर एरिया पे या स्प्लीन एरिया पे, राइट या लेफ्ट साइड दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। अगर बेबी को प्रोन रखना है तो दोनों स्कैपुलास के बीच में। तो अप्रोप्रिएट साइड चूज करो। अगर उस साइड पे कुछ कॉन्टामिनेशन लगा हुआ है, कोई रैशेस है वहां पर, वहां स्किन निकली हुई है, तो प्लीज डॉक्टर को पूछो कि आप और कहां पर उसको लगा सकते हो। Check the side which should be in contact with the skin. Always see that temperature probe के 2 sides होते हैं। This is the side जो skin के contact में आएगा, ये जो है वो skin के contact में नहीं आएगा। तो C to 8 के आप सीधा लगा रहे हो, उसको उल्टा नहीं लगा रहे हो। देखो कि उस वायर के ट्विस्ट एंड टर्न हटा दो। ये टेम्परेचर प्रोब है, इसके अंदर कॉपर के वायर होते हैं जो काफी मेलिएबल, काफी बेंड हो जाते हैं, तो इसलिए वो काफी सारा मुड़ा तुड़ा सा हो सकता है। तो कोशिश करो कि उसको आप सीधा रखो, ट्विस्ट एंड रिमूव करो, बिकॉज उसके बिना आप लगा दोगे ना तो देखो ये वायर ऐसे हो जाएगा, ये स्टैंड अप पोजीशन में आ गया। अब ना इसके कांटेक्ट में स्किन है और ना ही कांटेक्ट में एयर है, ये कुछ बीच का ही स्टिकिंग को सेंस कर रहा है, तो ये हमेशा अलार्म देगा, ये हमेशा बेबी को गर्म या ठंडा करता रहेगा। तो इस प्रोब की इस तरह से कोई वैल्यू नहीं है। प्लस जिस तरह से स्टिकिंग को खींचा हुआ आप सब देख पा रहे हो, ये सारे बैंड्स बेसिकली बच्चे की चिमटी काट ली है यहाँ पे, तो इसके बीच में स्किन आ गई होगी जो स्टिकिंग और प्रोब के बीच में, तो स्किन की चिमटी कट गई है, तो अगेन ये एडेसिव इंजरी में, स्किन इंजरी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो प्लीज सी टू इट यू रिमूव द ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड अकॉर्डिंगली आप उसको अच्छे से प्लेस कर पाओ। हियर विल टेक ए एंड बी टुगेदर। बेबी आ गया हमारे पास। देखो बेबी का ब्रीदिंग एफर्ट कैसा है, बेबी गास्प कर रहा है, नॉर्मल एफर्ट। बेसिकली अपने आप को पूछो नॉर्मल लगता है कि नहीं लगता। अगर आपका आंसर नो है, दैट मीन्स गड़बड़ है। रेस्पिरेटरी रेट काउंट करने की हैबिट डालो। लुक फॉर वर्क ऑफ ब्रीदिंग, रिट्रैक्शन है, ग्रंटिंग है, सॉर्ट ऑफ छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, बच्चा ऐसी आवाज करके ब्रीथ कर रहा है, नॉट गुड। सेम में आप यही ग्रंटिंग स्टेथोस्कोप से भी देखो, अगर आपको डेकेड ईयर से नहीं सुनाई देता है तो। सेंट्रल साइनोसिस को चेक करो, तो जनरली टंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, आईज है, ओवरऑल पूरा फेस, ये जनरली बताएगा कि बेबी साइनोज्ड है। पाम्स एंड सोल्स अगर साइनोज है थोड़े बहुत, जब बेबी ठंडा है तो ये नॉर्मल भी हो सकता है, फर्स्ट 1-2 दिन में ये नॉर्मल भी हो सकता है। एयरवे को चेक करो, देखो सिक्रीशंस, कोई बेबी ने वॉमिट किया है, कोई ब्लॉकेज है, कोई दिख रहा है जिसमें कोई सक्शन की जरूरत है कि नहीं, वो देखो। ब्लाइंड सक्शन प्लीज 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 नहीं करना है। ये चीज में कहीं पर भी डाउट आता है, ब्रीदिंग एफर्ट ठीक नहीं है, रेट का काउंटिंग मुझे गड़बड़ हो रही है, मुझे रेट ज्यादा ही लग रहा है, बेबी तो अदरवाइज ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, पर वर्क ऑफ ब्रीदिंग में मुझे डाउट लग रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा, सैचुरेशन आ नहीं रहा, पर बेबी थोड़ा साइनोज सा लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करूं। कुछ भी डाउट है, ऑक्सीजन शुरू कर दो। ओके, एटलीस्ट आप उसको बेनिफिट ना करो, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट हार्म नहीं करोगे, जो भी होगा फायदा ही होगा। तो इन एनी डाउट स्टार्ट ऑक्सीजन। ये कुछ एक स्कोरिंग सिस्टम है। जो बड़े बच्चे टर्म बेबीज हैं उसमें हम डाउनी स्कोर यूज करते हैं, जो प्री टर्म बेबीज में सिल्वरमैन स्कोर यूज करते हैं। हो सके तो इसके प्रिंट आउट्स अपने एनआईसी में रखो, सो दैट थोड़ा बहुत आपको आइडिया आए कि बेबी कितना सीरियस है। तो ओवरऑल जैसे आपको ये वाली सारी साइंस मिल रही है, दैट मीन्स ये बच्चा अभी अभी इंट्यूबेट होने को रेडी है। तो मोस्टली ऐसे बच्चों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। सेम में इधर आ जाओ, ये ग्रेड 2 वाले नीचे वाली लाइन अगर है प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये बच्चा अभी इंट्यूबेट हो जाएगा, अभी कभी कभी, अब इस मिनट नहीं तो नेक्स्ट मिनट। तो बस ये आदत डालो, भले आप पूरा पूरा स्कोरिंग नहीं कर पाओ, पर अगर लास्ट लाइन
डाउनी स्कोर की ये लास्ट लाइन, सिल्वर स्कोर की ये लास्ट लाइन, अगर ये वाले फाइंडिंग आपको मिल रहे हैं तो दैट मीन्स कि अब बेबी की अच्छे से बैंड बजी हुई है और ये आपकी बजाएगा, तो अच्छे से आपने उसके लिए रेडी होना है। स्टार्ट रेस्पिरेटरी सपोर्ट वॉट एवर वॉज गोइंग ऑन। सो अगेन हीरो नहीं बनना है, नेवर डिसकंटिन्यू ऑन गोइंग सपोर्ट। जो सपोर्ट चलता है वो हमेशा चलना है, बच्चा कितना भी स्टेबल क्यों नहीं लगे। बच्चा अगर इंट्यूबेटेड आया है हम उसको इन्वेजिव वेंटिलेशन पर ही लेंगे, बच्चे का भले रेस्पिरेटरी एफर्ट कैसा भी हो, हम ऑनगोइंग सपोर्ट चालू रखेंगे, असेस करेंगे, फिर आगे का डिसीजन लेंगे। नहीं है तो ट्यूब इंट्यूबेटेड आया, एफर्ट तो अच्छा लगा, मुझे लगा तो बेबी क्राई कर रहा है, मैंने ट्यूब निकाल दी, फिर ट्यूब डालेगा कौन अगर जरूरत पड़ेगी तो बहुत सारी बार इस स्टेज में हम अननेसेसरी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करते हैं। तो कभी भी ऑनगोइंग सपोर्ट को डिसकंटिन्यू नहीं करना है, उसको ऑलवेज चालू रखो। आप सपोर्ट को एस्केलेट कर सकते हो, उल्टा रिवर्स कभी नहीं आओ। हमेशा SpO2 प्रोब जब अटैच करते हो उसको राइट हैंड में अटैच करो, जैसे ये अटैच किया हुआ है। C-to-8 के ट्रांसड्यूसर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के सामने आए। सॉरी, तो जैसे इसमें दिखाया है तो ये ट्रांसड्यूसर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के सामने हैं। तो जहां पर भी आप लगा रहे हो, लेग पे लगा रहे हो, हैंड पे लगा रहे हो, मान लो लेग ये ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे बड़ी सी आईवी लाइन लगी हुई है, यहाँ ये हाथ बर्न है, हाथ में कोई इन्फेक्शन बना हुआ है, रैश है, आप कहीं और लगा रहे हो। C-to-8 के जैसा आपका सैचुरेशन प्रोब है, आप बॉडी थिकनेस वो उस तरह सिलेक्ट करो कि उसका ट्रांसड्यूसर और रिसीवर हमेशा एक दूसरे के सामने आए। जब भी लगाते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड एवरेजिंग टाइम। हर एक मॉनिटर का एक एवरेजिंग टाइम होता है, तो जल्दी वो 8 से 16 सेकंड का है। तो लगाते ही तुरंत आपको रीडिंग आनी नहीं शुरू हो जाएगी, रीडिंग आएगी तो भी वो चांसेस है कि रिलायबल नहीं होगी। तो बहुत हड़बड़ी में एक से दूसरी साइड, दूसरी तीसरी साइड, ये सैचुरेशन प्रोब लगता नहीं चल रहा, मुझे दूसरा चाहिए, मुझे इसका जगह तीसरा चाहिए, प्लीज ऐसा हड़बड़ी नहीं मचाओ। एटलीस्ट मॉनिटर को टाइम दो, एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड्स का। देखो कि अच्छे से ग्राफ आता है कि नहीं आता है, इसको प्लेथिज्मोग्राफ कहते हैं। तो प्लेथिज्मोग्राफ अच्छे से आना चाहिए जो यूनिफॉर्म है, एग्जैक्टली एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, ऐसे बढ़िया सा वेव चल रहा है और वो पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है। तो जब वो पूरी स्क्रीन को कवर करता है, अच्छे से यूनिफॉर्मली आता है, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन लेवल आपका डिस्प्ले होता है वो हमेशा रिलायबल ऑक्सीजन लेवल है। ओके, तो तब तक हमेशा आपको वेट करनी है। SpO2 एम्पावर योरसेल्फ, ऑक्सीजन सप्लाई आपके हाथ में ही है, कितना ऑक्सीजन देना है। C-to-8 जब आप SpO2 को हमेशा 90 से ऊपर मेंटेन करो। हाइपोक्सिया के अपने डैमेज है, हाइपरऑक्सिया थोड़े टाइम के लिए हार्म नहीं करेगा। तो अगर बेबी 100 सैचुरेट कर रहा है, आपने उसको नीचे नहीं लाया, थोड़ी देर चलेगा, और वो 80 हो गया और 80 को आप 90 नहीं लाए तो डेफिनेटली बेबी को परेशान करेगा। तो C-to-8 के SpO2 हमेशा 90 या उससे ऊपर चले। कैपी रिफिल टाइम आप चेक कर सकते हो, पल्सेस चेक कर सकते हो, बीपी हमने चेक करना ही है, हमने चेक करना सीख लिया। इफ पॉसिबल, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बेबी को स्टेबलाइज करने के बाद या विद इन 24 आवर्स, हमेशा एक आदत डालो कि बेबी के चारों लिम्ब का बीपी चेक होना ही है। बेबी स्टेबल है, नहीं स्टेबल है, कैसा भी है, सिक बेबी के 4 लिम्ब का बीपी होना ही चाहिए। सॉरी। जो भी अगर बेबी आईवी लाइन लगा के आया है उसको चेक करो, रिमूव कर दो अगर वो आईवी लाइन आउट लगती है तो, आईवी लाइन गंदी हो गई है तो आसपास ब्लड जमा हो गया है, या फिर आपने दूसरी आईवी लाइन एस्टैब्लिश कर लिया, वो आईवी लाइन नहीं चाहिए। तो अगर उसका ड्रेसिंग खराब हो गया है, आईवी लाइन नहीं चल रही है, जो नहीं चाहिए या उसको जिसको चेंज करना है चेंज करो। उसका कनेक्टर गंदा हो गया है चेंज करो, उसका बाकी सब कुछ भी ठीक नहीं है, आउट लगता है, एरिथेमा हो गया, एक्सट्रावर्जन का डाउट आ रहा है, निकाल दो। प्लीज पार्डन मी। Sorry. Dr. Samir, last 5 minutes. Yes, I'm about to finish. Okay. RBS चेक कर लो। RBS चेक करने के लिए हील ब्रिक की साइड्स होती है। सॉरी। तो C-to-8 जो ये पंचर साइट यहाँ पे दिखाई हुई है, यहाँ पे पंचर करो। कभी भी सेंटर में पंचर नहीं करना है, कभी भी टोज के ऊपर पंचर नहीं करना है। तो जो ये साइट दिखाई हुई है
यहाँ पे पंचर करो और आरबीएस चेक कर लो। बेबी का वेट कभी भी एसेंशियल नहीं होता, हमेशा बेबी को स्टेबलाइज होने की वेट करो। वेट ओनली आफ्टर स्टेबलाइजेशन, इन वेट शुड ऑलवेज बी बेड साइड। वेंटिलेटर पे लगा दिया बेबी, अब ठीक है, बढ़िया वेंटिलेशन चल रहा है, वेइंग स्केल कहीं और था, इसलिए वेट चेक करने के लिए हम सबको डिस्कनेक्ट करके बच्चे का वहां ले जा रहे हैं। प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए, वेट हमेशा बेड साइड ही होना है। तो अल्टीमेटली हम ये TABCD करके क्या अचीव करते हैं? तो हम अचीव करते हैं टॉप्स। तो हमें टेम्परेचर स्टेबलाइज करना है, बेबी का ऑक्सीजनेशन स्टेबलाइज करना है, बेबी का परफ्यूजन स्टेबलाइज करना है, बेबी के शुगर स्टेबलाइज करने हैं। अगर हमने टॉप्स को स्टेबलाइज कर लिया, हमने आधा बच्चा ट्रीट कर लिया। तो व्हाट आर ट्राइंग टू अचीव इज टॉप्स। तो आपने टॉप्स कर लिया, आपने 50% काम, डॉक्टर का काम कर दिया, 50% बेबी स्टेबल हो गया, हमारा डिजीज 50% ट्रीट हो गया। Now how can we become better? To become only better when you are not working. Okay, so always pray that your NICU should not stay full all the time. Okay, बीच बीच में ब्रेक्स आने चाहिए, NICU खाली रहना चाहिए, so that आपको टाइम मिले अपने आप को असेस करने का, आपको टाइम मिले अपने आप को बेटर बनाने का। तो when NICU is empty, that is when you grow. Okay, so lay foundation for success. That means कि पहले तो रोल असाइन करना सीखो, अपने आप को एम्पावर करना सीखो। फीडिंग और ऑक्सीजन ये हमेशा नर्सिंग स्टाफ का ही परव्यू है। अपने राइट्स जानो, अपने को जो आता है उसके लिए कम फॉरवर्ड कि मुझे ये आता है, मुझे सिखाओ, मुझे आता है, मैं मुझे और सीखना है। डॉक्टर हमेशा आपको सिखाएंगे। इक्विपमेंट चेक करना सीखो, इक्विपमेंट को मेंटेन करना सीखो। जब भी सर्विस इंजीनियर आते हैं, जस्ट उसको एक मॉनिटर दे दिया, हम कहीं और कुछ काम करने में लग गए, ऐसा नहीं करो, उनके साथ रहो, सीखो। बैग्स बनाओ, ट्रे बनाओ फॉर एवरी स्टेप ऑफ स्टेबलाइजेशन। जैसे मैंने कहा कि सब कुछ साथ में इकट्ठा नहीं कर दो, एक बैग बनाओ। जैसे आईवी लाइन का ट्रे बनाया, रजिस्ट्रेशन का बैग बनाया, किसी और सेंट लाइन का बैग बनाया, आईवी लाइन का बैग बनाया। तो उस तरह से बैग और ट्रे आप चाहो तो अलग अलग सब चीजें कर सकते हो। अंदर अंदर एक दूसरे की एग्जाम लो, मॉक ड्रिल रन करो, सिनेरियोज रन करो, ड्रग का कंपोजिशन सीखो। समझ रहे, ऑगमेंटिन, फॉस्फेनिटॉइन, जिसमें मिलीग्राम ड्रग का अलग है और मिलीग्राम स्ट्रेंथ का अलग है। जैसे ऑगमेंटिन में अमोक्सिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड है, तो जो डोज कैलकुलेट होता है वो अमोक के हिसाब से होगा, नॉट क्लेवुलिनिक एसिड। सॉरी। सो उस तरह से ड्रग का कंपोजिशन सीखो, डोज कैलकुलेट करना सीखो। जैसे डोपामिन 1 ml 40 मिलीग्राम है, अगर मुझे 20 ml 12 मिलीग्राम डोपामिन लेना है तो मैं कैसे लूंगी? तो ये चीज सीखना शुरू करो, डोजेस लर्न करो, कैलकुलेशन लर्न करो, पढ़ो। देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर नॉलेज। जब भी फ्री हो पढ़ो, न्यूरोलॉजी की बुक्स मांगो, ड्रग डोज की बुक मांगो। ओके, सो आई विल एंड हियर, माय थ्रोट इज आल्सो सेइंग कि एंड समीर बहुत हो गया, इतना नहीं बोलते। सो लेट वेट फॉर अ सिक बेबी टू अराइव बिकॉज नाउ वी आर ऑल रेडी। इफ देयर एनी क्वेश्चन आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक इट। Have an excellent, wonderful presentation. So many practical tips. I especially liked your platinum rule that you should always ask for help when it's required. So thank you so much for the talk. Thank you. Thank you, Ashish sir. Dr. Rajan Joshi sir, any comments for the speakers or any? No, I think it's very important. I mean, I feel Ashish, the only thing that we should now say that this, I mean, now it's like, I mean, if you guys watch football nowadays, you see that it's no longer a defender. The defender comes and scores the goal. The striker comes to defense. So nowadays, I don't think that it should be anything separately. What is for neonatal nursing and what is neonatal doctors? You know, everything. Just like we should know nursing principles, they also should know drugs. As what Samir says is that there's no substitute for knowledge. Yes. I mean, you just are the same players and you have the same knowledge. It's just you're assigned yourself different roles.
like fixing. I think I've seen some of the people who have done their neonatology struggling how to put in a pulse oximeter to a newborn baby which is born. So I think, and just putting it the wrong way after years of practice, and they just they say that this reading is coming, and you just ask them where to put the pulse oximeter that they struggle. So I think it's all, we are in a same team. It's a team game, and I think the rules are, I mean, it just happens to be a different platform, but the same lecture, same thing, the writer first and second lecture. This could be a lecture for neonatologists also, it could be for neonatal nurses also. Ultimately, all of us are the same rules of the game. We have to score the goal. And I think every little bit helps. Thank you, Samir. Thank you, Dr. Sonali. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. So thank you, Dr. Sonali. It was a wonderful talk hearing to you, and it's a very interactive session. So thanks a lot for that. Yes. So on behalf of Maharashtra NNF, I would like to thank all the viewers for joining in. And if there are any questions, I'm sure the experts can take in. So far in the chat box, I don't see any questions. Yeah, I don't see any questions right now. So thank you very much. Thank you all for joining in, and I'll see you next time on the 14th of October, where we'll again have two important talks related to NICU nursing. Thank you all. Thank you for joining in. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Jaisal ma'am. Thank you, sir.